सर आपके अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट ए मैटर ऑफ एनर्जी, इज ऑल मैटर आप अपने काम में कितने फोकस्ड हैं। कि आखिर यूएसएमएलई है क्या? जी, ये वो एग्जाम है जिसको पास करके आप यूएसए जाके मेडिकल का साइंसेज का काम कर सकते हैं। स्टेप्स कितने होते हैं? जैसे स्टेप 1 स्टेप 2 की बात करते हैं। एज फार एज स्टेप्स आर कंसर्न, देयर इज स्टेप 1, स्टेप 2, step 2 maybe there are step 2 CK, step 2 CS. Now the USA government is in bad need of doctors. मेडिकल जो एग्जाम होते हैं उसमें कई ऐसे एग्जाम हैं जो फॉरेन एग्जाम्स की इसकी बात करते हैं, MRCP, USMLE, और कई से सवाल भी आते हैं और इसके जवाब कई से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर जाते हैं बच्चे मिलते हैं। आज द पब्लिक न्यूज 24 में डॉक्टर भाटिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के फाउंडर डॉक्टर मुकेश भाटिया जी हमारे साथ हैं। और डॉक्टर मुकेश भाटिया सर के बारे में एक बात बोलूं कि आज से करीब 26 साल पहले उन्होंने इस करियर को शुरुआत की थी। आज वो जो करियर जो उन्होंने स्टार्ट की थी, और खासकर जब पीजी के लिए जब कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करता था, उसके बारे में थोड़ा सा उनका लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे। और आज स्पेशली हमने डॉक्टर भाटिया साहब को इनवाइट किया है यूएसएमएलई के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। और डॉक्टर भाटिया साहब, आपका द पब्लिक न्यूज 24 में स्वागत है। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। और बहुत बहुत बधाई सर। इस बार भी सर डॉक्टर भाटिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से सारे रैंकर्स, अभी जो परसों एग्जाम हुए हैं, जो रिजल्ट आए कल, और उसमें सारे रैंकर्स आपके यहाँ से हैं। थैंक यू, धन्यवाद सर। एक सवाल है सर, बहुत सारे बच्चों के, सर आपके अंदर इतनी एनर्जी आती कहां से है? ये सवाल जस्ट आई रिसीव्ड फ्रॉम डॉक्टर मोनिका। तो इतना एनर्जी सर आप कहां से लेके आते हैं सर? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट ए मैटर ऑफ एनर्जी, इज ऑल मैटर आप अपने काम में कितने फोकस्ड हैं। जी, अगर आप अपने काम में फोकस्ड हैं तो आपकी सारी एनर्जी काम में लगेगी। अगर फालतू के कामों में मन लगाओगे तो सारी एनर्जी और टाइम वहां खराब हो जाता है। सेव योर एनर्जी इज द ओनली रूल, फोकस टू योर वर्क इज द आंसर। सर उसमें एक फनी क्वेश्चन और है सर, कि आज से आपको सर 10 साल पहले मुंबई में लोगों ने देखा था, आज भी सर आप वैसे ही दिखाई देते हैं। देखिए जी, इससे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट भी नहीं मिल सकता कि एक यंग लेडी कहती है कि यू आर एज इट इज। आई थिंक यू मेड माय डे, थैंक यू वेरी मच। आई लाइक दिस क्वेश्चन वेरी मच। जी सर, अभी सर यूएसएमएलई के बारे में जो एक लोगों में सर और खासकर बच्चों में बहुत सारे सवाल हैं। तो सर सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा सर कि आखिर यूएसएमएलई है क्या? या वेरी गुड क्वेश्चन। ये यूएसएमएलई, इसका फुल फॉर्म है यू फॉर यूनाइटेड, एस फॉर स्टेट, एम फॉर मेडिकल, एल फॉर लाइसेंसिंग, ई फॉर एग्जाम। ये वो एग्जाम है जिसको पास करके आप यूएसए जाके मेडिकल का साइंसेज का काम कर सकते हैं। ये सिंपल वे, मान लीजिए आप किसी का इंडिया के किसी भी शहर में है, यू आर इन एनी सिटी इन इंडिया, यू वांट टू ड्राइव ए कार, यू हैव टू टेक ए ड्राइविंग लाइसेंस। Without that, you cannot drive. Same thing, this is also that it's like getting a license to do medical practice in USA. It's just a entry ticket to USA. It is not equivalent to post-graduation. This point should be clear to all of you. Okay, I hope you got an answer. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा सर, इसमें एक सवाल आता है सर, इसमें स्टेप्स कितने होते हैं? जैसे स्टेप 1 स्टेप 2 की बात करते हैं, सर इसके बारे में बताइए सर। या देखा, as far as steps are concerned, there is step 1, step 2. Step 2 maybe there are step 2 CK, step 2 CS. Now the USA government is in bad need of doctors. They have made USMLE much easier. So they have converted USMLE step 1 into pass and fail. And USMLE step 2 ka CK is there, but CS they have removed. That means now even one CS is removed, which was a difficult and expensive exam. That is removed, so now it becomes very, very easy for Indian doctors or people from any other part of the world. They can very easily go to USA. सर अब मैं कुछ सवाल सर मैं आज बच्चों का भी लूंगा सर। कुछ बच्चों का सर सवाल ये था सर
कि हमारे सर यूएस असेंबली के लिए सर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पढ़ने के लिए? क्या पढ़ने चाहिए? First of all, your basic concept should be very, very clear. And moreover, they do not ask a question of anatomy, physio. They nothing like the Indian exam. We have anatomy, physio, biochemistry. There's nothing like this. They want your basic concept should be very, very clear, because everything is mixed up. They ask question based on integrated approach, not a individual subject. And suppose you are sitting in a room and there is a table in front of you. The level of height of table is the level of NEET or Indian PG exam. Now you see at the top, okay, ceiling. That is the height of USMLE. That means huge difference is there. So that's why people say, oh, I am reading, I have read NEET PG. Is it good enough to clear MLE? No way. There's a huge difference between Maruti and Mercedes. Same is the difference between Indian PG and the USMLE. Yeah. सर एक डॉक्टर ऋषभ का एक कॉल है और इसका एक मैसेज भी है सर कि हमें यूएसएमएलई की जो तैयारी करने का सर क्या मैं सेकेंड ईयर से शुरू कर सकता हूं या अभी तो हम लोग फाइनल ईयर में है? Ideal time to start is second year, but any time in undergraduate you can start, because okay, even if you are in final year you can very well start. We'll guide you how to do all these things. तो सर इसमें क्या दिक्कत आएगी सर? जैसे अभी यहाँ पर पीजी एग्जाम होते हैं, इंटर्नशिप होते हैं, फिर उसके लिए भी मैंडेटरी हो गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको क्वालिफाई होना जरूरी है या फिर आपका सेमीप्लस की डिग्री होना जरूरी है। Yes, this is true that you should clear your MBBS and your internship should be completed. That is mandatory. Without internship, your degree is not complete. That is universal truth. You become doctor only once you got clear, you have done your internship, then only you are doctor, complete doctor. Otherwise, your degree is incomplete. It is just like somebody gives you a check without signing. Will you take it? No way. It has no value. Similarly, after passing MBBS, it has no value unless you do internship. So internship is mandatory. Yes. सर जो बेस्ट टाइम जो आप जैसे बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए सर एग्जाम को लिखने के लिए, और उसका सर प्रोसेस क्या है पूरा स्टेप 1 देने के लिए? सर यहाँ पर कैसे एग्जाम होते हैं और स्टेप 2 के लिए क्या करना होता है सर? वेरी गुड क्वेश्चन. As far as your exam step 1 and step 2 concerned, well, when this exam happen daily, Monday to Friday, any day you can go and write. You have to do the pre-booking do it, and you can go and write exam. Except Saturday, Sunday or Thursday holiday, exam happen every day. Now, when to write the exam? Best time to write step 1 is in the early part of internship. And in the later part of internship, you should go for clinical rotation. And soon after completing your internship, you should write step 2. Now, the people, they have a common myth. Senior says that you should write step 1 in third year. Is the most blunder mistake of the life. Don't commit this mistake. Okay, so senior says, no, there's nothing like. This is all myth. You always should write in internship. Remember, even if you clear your exam in third year, you cannot go to USA unless you have cleared your internship. So better to write in internship. Okay. सर इसमें जो एग्जाम का जो फॉर्मेट है स्टेप 1 स्टेप 2 का, ये सर ये फॉर्मेट है क्या सर? Yeah, these are all MCQ based questions. Okay, you have to go to center. There are all 8 hours. Exams are there, and in every block there are around 40 questions are there, and you get 1 hour for each block. So, in nutshell, it is summary. Summary is that they are all MCQ based, clinical based questions. They are not one-liner. They are very long questions. That means you should maintain the speed also. Otherwise, you are bound to lose the questions because of lack of time. So it's a continuous about 8 hours. Of course, you get break of 60 minutes. That you can take any time. You can take 3 break or 20 minutes, 2 break of 30 minutes, or 1 break of 60 minutes. All depend on you. So, but they are very particular. Everything goes by dot on time. सर स्टेप 1 क्लियर करने के बाद स्टेप 2 का फॉर्मेट सर सेम है इंडिया में होता है सर कि यूएस में होगा? It's again a MCQ based question. Now let me tell you what the difference between step 1 and step 2.
in step 1, the question will remain the same. For example, I give you one example. A 48-year gentleman come to you with pain chest. ECG shows ST elevation in V1, V2, V3. I repeat again. If I'm giving you a short question, a 48-year gentleman come to you with pain chest, ECG shows ST elevation in V1, V2, V3. This question will come in step 1 and step 2 also. But in step 1, he will ask you which artery is involved. It is V1, V2, V3 is left anterior artery. Same question will come in step 2 also. They'll say, what is the best initial treatment? Answer is low dose aspirin. So now what they want, they don't want any particular question. They want your basic concept should be very clear. He says that pain chest and V1, V2, V3 ECG. And now which anatomy? They correlated this clinical question to anatomy, left anterior descending artery. Same question they ask treatment. Now they are asking the management part. So there is nothing like subject. They want a concept. I hope all of you who are medical people, they will understand my point. सर आपके इंटरव्यू से पहले मैंने मैसेज किया था कुछ डॉक्टर्स को और कॉलेज में, तो नाउ आई एम गेटिंग सेवरल मैसेज कि कुछ सवाल करने के लिए जस्ट अभी मिला सर। एक सवाल है सर, ऐसा है कि यदि जो भी अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं और कुछ लोग, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनको बोलता है कि आप इंटर्नशिप मत करो, इंटर्नशिप आप आके आप अभी यूएस में आ जाओ और यहाँ से पहले 2 साल काम करो, उसके बाद फिर जाके इंटर्नशिप कर लेना। तो सर इस बात में ये कोई ऐसा होता है सर? First of all, going to USA for 2 years is very, very expensive. USA is 3 to 4 times more expensive than India. No, in internship you should go only for 3 months for rotation. Once you do rotation, then you get LOR. LOR stands for letter of recommendation. That is very essential. But not for 2 years. No way. Nobody says for 2 years. I'm listening for the first time that you go to USA for 2 years. No. 3 months, yes. To get a LOR, letter of recommendation. साहब बिल्कुल आंसर मिल गया होगा। बट सर एक जैसे आप इंडिया में पीजी एग्जाम होता है, तो पीजी इंडियन जो पीजी करते हैं स्टूडेंट्स और यूएसएमएलई, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस क्या है? Huge difference, no comparison. If I ask you what okay, is there any difference between Maruti and Mercedes? Yes, huge difference. Both are cars. Both are cars, but huge difference is there because in USMLE they ask. Again, I give you an example. They ask concept-based question, not one-liner or short question. I told you they give you 40 questions to be done in 60 minutes. That means for 1 hour, one question you get 90 seconds. In contrast to India, you have to do in 40 seconds. That's the difference because they ask long questions. Your concept should be your fundamental should be very, very strong. That is a prerequisite of USMLE exam. सर सर इसमें एक बच्चे का सवाल है सर, और अभी वो फर्स्ट ईयर में ही है एंड उसका बोला जाता है कि आपको यहाँ पर स्टेप जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं वो पहले क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यूएसएमएलई की तैयारी कर सकते हैं। तो सर एक इसका कुछ कंफ्यूजन है। नो, यू शुड स्टार्ट, एक मिनट में, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूएसएमएलई राइट नाउ। Okay. You should start preparing for USMLE Step 1 now. Simultaneously, of course, you have to clear your university exam. You have to clear NEET next also. Then only you will be able to clear your internship. And after internship, of course, as I told you, you should write your Step 1 in early half of internship and Step 2 in after the internship. सर इंडिया में सर और खासकर फॉरेन कंट्री में भी सर आपको एजुकेशन, खासकर मेडिकल एजुकेशन में आपका बड़ा नाम है सर। आपके अभी सर जो आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से सर यूएसएमएलई के लिए इंडियन स्टूडेंट में जो क्यूरियोसिटी है और पार्टिसिपेशन कितना बढ़ रहा है सर, कितने परसेंटेज के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है अभी? बहुत, इट इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग. Most of people we are not aware about the details. Otherwise, everybody want to go to USA. Who doesn't want to go to USA?
Once you reach USA, even your residency start, you start getting salary of 60 to 70 lakhs per annum. And once you clear your residency, then you, when you become consultant, you start earning in crores. सर And रिचिता का सर रिचिता but का सर यही सवाल था सर कि सैलरी कितना मिलता है सर? huge salary. 60, initial beginning salary is 60 to 70 lakhs. And Okay. once you clear, then in the crores of rupees is there. More than money is the quality of work, quality of lifestyle is there. But of course, things are not so easy. You work hard and we are there to support you, guide you. Everything we are there to help you out. सर आपके अभी डॉक्टर भाटिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से कई लोग सर अभी यूएसएमएलई निकाले एग्जाम, इवन स्टेप 1 स्टेप 2। सर आप सर क्या ऑफर करते हैं? सर आपका पढ़ाने का तरीका क्या है? क्या सर करते हैं कि इतना एग्जाम लोग निकालते हैं? DBMCI has come up with the new courses for USMLE as well as those who want to go to UK for MRCP also. Since today we are talking about USMLE, so I'll tell you about USMLE. Well, we have come up with the USMLE Step 1 and Step 2 courses. First of all, we will be teaching in 3 rounds. In round 1, we detail all the basic concept. We teach all the basic concept. So our basic concept of Indian students are very weak. So we teach all the basic concept. We consolidate. And after this, there are about 350 hours of these lectures around 1. In round 2, we will give you about 700 to 800 tests and we'll do discussion also. That means we have given you a test, you do the test attempt, then we'll discuss why the answer A is correct, B, C, D is not correct. So round 2, if you do this much, you are really ready for the exam. Then we have round 3 where we will give you 20 mock tests, full syllabus mock tests. And in this week, 90% of the question what you will be getting in the exam will come from what we have taught you. Nobody can talk about 100%. 90% is a very good percentage. If you can solve 90% question, then you are the topper in USMLE exams. Okay. सर इसमें अभी डॉक्टर भाटिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से जो आप पढ़ाते हैं, तो क्या सर एक साथ में कोई स्टेप 1 स्टेप 2 इन सब के लिए भी ज्वाइन कर सकता है आपके यहाँ? Yes, you should join step 1, step 2. I told you there is no difference in the preparation. The only thing is the question format changes. You should join together. There is no point in taking half. Take 2. Like you have gone to a hotel to have South Indian food, dosa and sambar. You can't ask only for dosa, don't give me idli, or don't give me sambar, don't give me soda or dosa. It should be both. And we will prepare you, and you will be come up with the flying colors. And of course, if you want to see some of the free videos, we can share you the free videos after this interview is over. I'll request the Sunilji to display my number, my email ID and phone number, so that students who want to contact me, they can contact me. We can show you videos, and many of you have some personalized questions. We can do that also if you have. Okay, so in that way, we are there to help you out in all the possible ways. सर बहुत सारे सवाल महाराष्ट्र के अहमदनगर, नांदेड़ और लोनी और स्पेशली डीवाई पाटिल से आए हुए थे, और आप हमारे पूरे आर्टिकल आप देख सकते हैं और उससे पूरे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे और इनकी जो पूरी सिलेक्शन क्राइटेरिया है इसकी भी डिटेल्स आपको आर्टिकल में मिलेंगे और न्यूज में। और सर आपसे एमआरसीपी के लिए भी आपसे हम करें कनेक्ट, क्योंकि एमआरसीपी में भी सर आपका अभी यूके में और खासकर जो पूरे एक मेडिकल फैकल्टी में सबसे ज्यादा जो नाम अभी आपका लिया गया, आपके कंटेंट को लोगों ने सराहा है और रिकॉग्नाइज किया सिर्फ आपके कंटेंट को, तो उसके बारे में भी सर हम लोग बात करेंगे। यूएसएमएलई का सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, कितने साल का सर कोर्स वो ज्वाइन करना चाहिए आइडियली सर अभी आपके यहाँ कोई ज्वाइन करना चाहता है? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। डिपेंड करता है आप स्टूडेंट किस ईयर में है। इफ यू आर इन सेकेंड ईयर, प्री फाइनल, डिपेंडिंग ऑन माई। सर देखो बच्चा सेकेंड ईयर में है, अभी सेकेंड ईयर में है सर, सबको सेकेंड ईयर, तो यू शुड टेक कोर्स till your internship. You should take 4-year course because you have to write your exam in an internship. Okay. And moreover, every year we update our notes, the new thing we keep on adding. Suppose you are in second year, you take course only for 1 year. Then by the time you come to internship, you'll forget everything. And moreover, in 3 or 4 years, a lot of things change, new drug,
new procedure, new concept come. So you will be deprived of that knowledge. So my strongly advice is whichever year you are, you take till your end of internship so that you are in touch with us. And of course, one more thing, we also give personalized mentoring. We do Okay. daily mentoring. Nobody else does it. Daily Right. mentoring me, you have to report to me. I'll guide you how to study. Sir, I study a lot. I'm not able to remember. I forget everything. I'll guide you. And Hmm. okay, and moreover, my this our teaching will help you in your NEET and next exam and university exam also. And I'm very happy to share that in this year NEET exam, 60% question came from my content only. Single faculty, 60% NEET question. And moreover, I hope you are well aware that I have come up with the medical textbook of medicine simplified. It is available in Amazon also. Is summary of Harrison, Mini Harrison is there. Okay, if you, there's no other book better than Mini Harrison. सर Is आप इस summary of बुक के बारे में Harrison. सर इस बुक के बारे में सर भी प्री बुकिंग भी चल रही थी आप सर इस बुक के बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर Recently, मेडिकल I have come up Mini Harrison, is summary of Harrison. Harrison is the ultimate of book of medicine, no doubt about it. But it's too vast. Reading one page of Harrison, you need to half an hour, and to understand, you need 2 hours. But you need only 2 minutes to forget what is written in that page. So don't read Harrison. Whatever you need to read from Harrison, it is there in my book, Medicine Simplified. It's the number 1 book in Amazon. You can very well buy from that place also. मतलब आपको जहां जहां पर भी भाटिया इंस्टीट्यूट के जहां पे सेंटर है वहां पर भी आपको ये मिल जाएंगे और Yeah, ये सारे center. बुक्स Yes, yes. या सेंटर पे भी मिल जाएंगे सर इसमें डॉक्टर भाटिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से जब मेंटरशिप करते हैं स्टेप 1 निकालने के बाद यूएस में जाने के लिए कई ऐसे बच्चों को आइडिया नहीं है तो क्या सर इसकी भी गाइडेंस आप लोग देते हैं सर Everything. Once you join us, we give full guidance. ओके Full guidance we give you. Everything we. That's why I say we do personalized mentoring. Nobody else does all this thing. We will give personalized mentoring. Okay. But one thing you should know. Every student should know that preparing for USMLE, it's a little expensive. 30 to 40 lakhs are needed rupees for from going from India to USA, including residency, interviews, staying for even doing your rotation for 3 months. All these are the bit expensive. But when you enter, you earn a huge amount of money. Whatever money you are spending, you can recover in just 6 months only. तो सर क्या एक आई डोंट नो कि सर सवाल पूछना चाहिए क्या सर आने वाले समय में स्टेप 2 का एग्जाम क्या ये भी सर स्टेप 1 जैसा ही भारत में बैठ के दे सकते हैं अभी भी step 1, step 2 both exam are done in India only. तो सर अभी जो सवाल यही मैंने वही सवाल जो लोगों का कंफ्यूजन है सर यही इसके लिए सर आपको हमने बुलाया था Let me clarify. जी Step 1, no doubt you can do in India. Previously in step 2, there were again 2 branches. I repeat again. Step 2 again had 2 parts. One is CK and other is CS. CK stands for clinical knowledge and CS is clinical skill. CK, what we talk is again MCQ based question you can do in India. CS was a practical exam for which you had to go to USA. But now that is abolished. That's why we save a lot of money. So that means for all practical purposes, you are only 2 exams, step 1, step 2, which are both MCQ based questions which you can write in sitting in India. No need to go to USA. सर राइट स्कोर क्या होता है सर सर्जिकल उसके राइट स्कोर क्या होंगे Right score, you should score more than 2. Now, again, one more very good question. I really salute Sunil for asking lovely question. Previously, there were marks in step 1, but now there are no marks in step 1. It's a pass-fail because USA needs doctors very much. So they are making the exam very easy. So in one way, they made easy is converting pass-fail, and number 2, they have abolished. I told you, clinical skill have been abolished, and now in step 2 you should score more than 240 marks. And for the step 1 passing score, sir? It was 196, but 96, but now they don't talk about marks, they simply talk about pass fail, but it should be more than 196 out of 300.
मतलब सर आप जो पहले एक जो पहले एक मिथ था कि यूएसएमएलई बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है, Nothing. अब Look, nothing like tough. Nothing like tough. I tell जी you, all the people who are watching this show, जी you and you cleared your 12th class and you entered into MBBS. हम्म Yes. Many of your friends could not enter. For them, exam was difficult. For you, exam is easy. So difficult or easy all depends on how you prepare, how you read. Dr. DBMCI is there to guide you in all the possible way. We have the best content in the world. I can challenge on this issue. Nobody else does the way we are doing. 3 round strategy. Round one is basic concept. Round two is test and discussion. Round three is mock test. Now people say, "Oh, my senior says read you world and blah blah," but they're all questions. हम्म Okay, so what we give mock test? No, your basics are poor. Unless you know your basic, you will not be able to clear your exam. This for one thing very clear about it. So that's why in round one we give you all basic concept. Round two test and discussion. Then come the mock test. After that you should go for USMLE. After that you should go for U World and other questions. But first make your basic strong. If your basic you clear any exam in the world. Repeating second time, our teaching will help you to clear your university exam as well as NEET and next exam also. तो आप यदि यूएसएमएलई आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पूरे यूनिवर्सिटी से लेकर आपके एग्जाम और खासकर पीजी की भी तैयारी हो जाती है। और जैसे मुकेश भाटिया सर ने बताया कि पूरा 60% क्वेश्चंस इस बार नीट के उसी उसी कंटेंट से आए हुए थे, उनके पूरा फॉर्मेट से आए थे। सर 26 साल पहले का जो जर्नी आपका हुआ था सर, एक छोटे से ब्रीफ बताएंगे सर कि 26 साल पहले आपने शुरुआत की थी सर, ये कहाँ से शुरुआत की थी और आपका आइडिया कैसे आया सर कि पीजी का ही शुरुआत करूंगा मैं? Well, very good question. I confess very honestly. I'm a practicing physician. Why I started this institute was so that I will also read. What teach is a universal truth. If you have to speak for 1 hour for on any topic, you have to read for 10 hours and you have to study 10 books. So I started the idea so that I also learn, I also read. And I came up with the idea of integrated approach. I started 26 years back, which Indian government is starting now. Okay, so I have a huge experience of integrated approach teaching. And the book what I have written is of Minnie Harrison, what we call as medicine simplified. Okay, it's all integrated approach means everything is there. Like when I taught HIV, anatomy, physiology, biochemistry, patho, pharma, eye, ENT, medicine, pediatrics, surgery, psychiatry, everything about HIV is there. You don't need to read anything else. If you are preparing for a NEET PG exam, like you see, study one topic of HIV from my book, then you open the question of anatomy, physio, biochem. That means the entire topic of HIV will finish studying all these questions relevant to that topic. This is the what need of today Indian PG exam calls. तो सर आपको कभी ऐसा लगा सर कि आज इंडिया के नंबर 1 मेडिकल इंस्टीट्यूट में सर आपका नाम है, तो जब आप शुरुआत की तो ऐसा फील हुआ सर कि ऐसा होगा फ्यूचर में? I never thought on those lines. I just did my work. Okay, I just did my work very honestly. I love my work. I teach with passion. And finally, the owner of my institute is Ganpati ji. It is his blessings are there with me and with my student also, by which we progress day and night. Okay, God blessing are essential to progress in the life. सर आपके बारे में बताया जाता है सर, खासकर जब आपसे बात करते हैं कि कई लोग एक ऊंचाई पहुंचने के बाद घमंड आ जाता है, लेकिन जब भी कोई आपसे बात करते हैं तो सर वही मुकेश भाटिया साहब हैं जो किसी भी टाइम पे बहुत ही प्यार से बात करते हैं। तो सर आपके अंदर ईगो क्यों नहीं आता सर? उसकी वजह है, एक तो इंस्टीट्यूट का मालिक मैं नहीं हूँ, गणपति जी हैं, मैं तो उनका एम्प्लॉय हूँ जी, मैं तो एम्प्लॉय हूँ। सेकेंड चीज जो मैं हमेशा आई टेल माय स्टूडेंट ऑल्सो, घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब इंसान को घमंड आता है तो उसका पतन चाह। घमंड किस बात का? सवाल तो किस बात का घमंड करूं कोई, जब मेरी चीज नहीं है, ना मैं मालिक हूं। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव, एंड the best source of improvement is students review. We talk to students, we give the idea, and we keep updating.
And same thing I tell my student, be a good human being before you become a good doctor. If you are a good human being, then you can become a good doctor also. Okay. तो कहते डॉक्टर मुकेश भाटिया सर वेल नोन पर्सनालिटी, और आपने बहुत सारे चीज उनका जर्नी से लेकर और खासकर यूएसएमएलई के बारे में पूरे एक डिटेल में हमने डिस्कशन किया। आने वाले समय में आप एमआरसीपी पीजी क्लासेस और खासकर एक मोटिवेशन के लिए मैं डॉक्टर भाटिया साहब को इन्वाइट करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आने वाले समय में सर बच्चे को, कि आज के समय पे आफ्टर द पेंडेमिक मोटिवेशन की बहुत रिक्वायरमेंट है, और डॉक्टर भाटिया साहब उस मामले में एक जैसे मैं एक चीज और बताऊंगा सुनील जी, कभी मौका लगे बच्चों को पढ़ने के तरीके नहीं आते, याद करने के तरीके नहीं आते हैं, कौन सी किताब पढ़े, कैसे पढ़े। आपको जान के हैरानी होगी, दुनिया का कोई सा भी एग्जाम दे लो, अगर आप 2 घंटे रोज पढ़ते हैं, अगर लेकिन आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। इट इज नॉट द स्पीड वी डिटरमिन डेस्टिनेशन बट द राइट डायरेक्शन। पढ़ने के तरीके आना चाहिए। कभी मौका लगेगा एक सेशन ये रखेंगे, पढ़ाई कैसे की जाती है, हाउ टू स्टडी टू टॉप इन एनी एग्जाम इन द वर्ल्ड। और हमारे मेडिकल प्रोफेशन में जितने भी स्टूडेंट होते हैं, वी आर ऑल अंडर स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि स्कूल का लेवल ये था और मेडिकल कॉलेज लेवल का ये हाई है। हमें किसी ने बताया नहीं कि पढ़ाई कैसे की जाती है। स्कूल में हम टॉपर होते हैं और मेडिकल कॉलेज में पास होने के लाड़े पड़े होते हैं। क्यों? Nobody has told us how to study in medical college. That's why we all are under great stress. Don't worry friends, किसी दिन बात करेंगे। बिल्कुल और खासकर जो फर्स्ट ईयर में आए हैं और जो फर्स्ट ईयर में जो बच्चे हैं, सेकेंड में जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। और डॉक्टर भाटिया मेडिकल इंस्टीट्यूट आज जो पूरे इंडिया में, आज सिर्फ इंडिया ही नहीं फॉरेन कंट्री में भी कई ऐसे बच्चे हैं जो वहां पर, चाहे यूएसएमएलई हो, एमआरसीपी हो, और खासकर एक स्पेशल प्रोग्राम हम एमआरसीपी पे लेके आने वाले हैं। सर रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन, सर आप ही को क्यों चुने सर? ये मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में लूंगा, लेकिन उस टॉपिक को फिर बात करेंगे, फिर बात करेंगे, ठीक है, फिर बात करेंगे, ठीक है। तो का फिर का, और मैं चाहूंगा कि किसी स्टूडेंट को कोई पर्सनल बात करनी हो, they can very well talk to me, they can mail me, we'll display the number, Sunil ji. So we are here. Okay, and before I tell you, the Public News 24 is a wonderful platform. They really are helping not only students, entire Indian community, they are helping in different ways. I salute the Public News 24, which is being headed by Sunil ji. You are doing commendable job. Today's session also, I'm sure most of students are getting benefit. This again एक परोपकार है, ये भी एक बहुत बड़ा परोपकार है कि आपने बच्चों को सीखने का मौका दिया। I really appreciate and I salute you for the great work you are doing. Thank you very much, sir. Thank you. Okay. Sir, thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Namaskar, sir. Ask me any question. Thank you. Yeah.